first of all, hello everyone. And now the group discussion, I'll give you a brief how to do a group discussion also. We have been covering different topics. Like if I'll say yes, topics were related to, you can say education, politics, economy, and many different streams we have already covered. Let's go for the entertainment purpose, right? And what for the entertainment is, like I can say you, the topic is very interesting and very similar to your day-to-day life. Every one of you might be familiar with social media and you might be using lots of, you can say, applications on your mobile phones to watch some online content. So I'm going to discuss on that topic only. And first of all, I'll give a brief like how to do a group discussion. What you have to do is, one of you will come with an introduction. Like I will reveal the topic. If it is versus, you have to start with a generic one, like good evening, everyone. We are going to have a discussion on this and this topic. And the topic is quite relevant to our day-to-day activities. Then you have to giving a generic line. You have to give your viewpoint that what you are in the favor of. Are you in the favor of one or the other? That comes in the case of versus. I'm teaching you out. There can be topic where is versus. There can be topic where is a simple line. There can be topic which is a social evil. So there could be different contexts. We are working yesterday also we did on some kind of a versus content. Hard work versus smart work was yesterday's topic of discussion. Today's topic of discussion, before I reveal it out, let me first give you the viewpoints. Second is, then you will say that then the house of discussion would get open and everyone would say that, yes, I am in the favor of it, I'm against it, I favor your opinion, whatsoever, and the discussion would continue. The GD varies from panel to panel. It can be 8 minutes, 10 minutes, 12 minutes, 25 minutes, 35 minutes. Even I would have a group discussion approximately of 20-25 minutes. Okay, where every one of you, there's a big number we have today, approximately 14 students are with us. And then after the discussion, I'll give you a siren that yes, your group discussion is over and one of you will conclude the entire discussion. Now do remember your sentences should be very small. Your examples should not be controversial. And the third is whenever you give me some kind of information, your conclusion should be a generic one. Your introduction should be a generic one, carrying your viewpoint. Clear with the, you can say the format, how to do a group discussion? Yes, ma'am. Everyone is clear. Okay. Now, the next thing, are you all ready with your pen and papers? Because we have 2 minutes for noting all the points. Exact 2 minutes. Yes. Ready? Okay. Yes. Amrut, am I waiting for you? And Sia. Are you guys there? Amrut and Sia? Okay, let me reveal the topic first. And topic is very simple. It is OTT versus theater. Topic is OTT versus theater. Now, the ones who are not aware, let me give you a brief, like all the content which you watch online, the Netflix and you can say the Amazon Prime, all comes in the category of OTT. And nowadays we are a huge fan of OTT too, because it's very, you can say flexible, you can watch it anywhere and you can stream online, some like of a content, you can speak on that. The theater, that was a beautiful era. We go for the theaters also and we watch that. And theaters, not only it's movie theaters, but you can also talk about the theaters which carry, I'm giving you multiple dimension of theater. It can be regarding the play also. If you have gone to the theaters in, I think, big cities or somewhere where the theaters have been conducted. Okay, where the plays are being conducted, you can discuss about that topic also. Clear, everyone? Is it okay? Yes. Yes, ma'am. Okay, who wants to introduce the topic? Yes, ma'am. Me. Ma'am, Introduction. Aniket. Okay, Aniket can introduce, Hemant can conclude. Is it okay? Ma'am, conclude yesterday कर लिया था, आज मैं introduce कर दूं. Okay, Hemant, you introduce it out. Aniket, you can conclude. It can go vice versa. Now it's 9:59 by my side. 10:01 will be the time when we will start. Note as much as you can. Okay. Amrut, Sia, are you there? Amrut and Sia. Okay, I don't think the both are. I'm sorry, I need to remove you because I've been waiting for long. Okay, so yeah, and see also I have to remove you. Yeah. Okay, so do Hello. as much as you can. Yeah, who's there?
Amrut, you have joined with a different ID. Okay. Any problem to anyone? The ones who are attending the GD for the first time. Just go for simple sentences, go for more examples, go for your own dimension, why you are in the favor of that particular thing. Either it's a theater one or it's an OTT one. Go for the best of the examples and what is the youth is going crazy for. You can talk about, you can say about the children also of small age. You can discuss the fun which theaters carried and lots of good points. I'm just giving you some pointers for the start because it's some of you are carrying it for the first time, but not in the later run. So do remember it out. Go ahead, 1 minute is left. Yeah, everyone, whose turn was there? I think Hemant had to start. Hemant, go ahead and everyone please go for brief points and go for different dimensions too. Just start. Hello, good evening, everyone. My name is Hemant. I got the opportunity to initiate the discussion. Today, the topic given us is OTT versus theater. In my opinion, it is quite relevant to our day-to-day activity in terms of entertainment, and the OTT and versus theater. These two are the own significance, their own places. Now, OTT play a huge role in your day-to-day life. Different kinds of platforms out there that like Netflix, Amazon Prime, etc., etc. But theater has their own charm. At a point of time, we are going to the places to just for entertainment purpose. We are whole solely give that span of time for the entertainment. But in case of OTT platform, we can use wherever we want to. Even as a take a break from our work, we are using OTT, and there are the certain advantages and pros and cons of both as well. So, and I'm sure you all guys have a various point to add on this. So I invite all of you to participate in the discussion. Now I open the debate and discussion for all of you. Thank you, Hemant. Continuing with what Hemant said, I would say that I am quite in favor of going to theaters for watching movies rather than going for OTT, because I believe that watching movies there with friends, that is a complete different ambience than watching movies in OTT being alone in a single room. So I am in favor of going there and enjoying with my friends and family. Okay. But now, from good evening to all. My point of view is OTT platform is very flexible. Means whenever we have time, we can just watch them, the pause, play, everything. And also theaters are time consuming. That is why I go for OTT. There is lots of opportunity also for the small characters, means who didn't have got some platform for their performance. They got some roles in OTT. Okay, good evening, friends, to one and all present here.
So the discussion, the today's discussion topic is OTT versus theater. So first of all, we have to know about what is OTT. So OTT stands for over the top. It is a stream content, or you can say in this type of content, in this type of you can say technology, you can see the stream content on internet. Okay, but on the other hand, in theater, we have a significant, means a large theater screen in which you have to see the movies or everything. So Netflix, Amazon, you can say your Amazon Prime, etc. They are all OTT contents. Okay, and I will definitely there is a you can say both are have their own importance in every time aspect. Like in COVID time, we have much more dependent on, you can say, much more entertainment will be provided by OTT platform, because theaters are that time are closed. So and if now today's day, theaters are much more relevant than OTT. So it's up to individual, choice to choice varies how they like. So Yeah, Yes, as thank my you. friend Aniket said that I am agree with him. Like OTT gives us our own privacy, and theater in theater we meet different type of people. So we can go our friends, but in OTT, but by OTT we can show only in room alone anything. So parallelly both are uh, good for us, but different perspective. Like if we want to Aruna, enjoy I outside, disagree with you. if we want to enjoy Thing is, outside, if you thing is, then if we you can have to go just theater. Good if evening, you everyone. want to just I go for the entertainment purpose, OTT is there. But if you just want to enjoy the things, you can go for the theaters. Good evening, everyone. I agree with Hemant what he said in starting, that OTT and theater both have their own props and cons. For example, in theater हम किसी मूवी का अगर टिकट खरीदते हैं तो हम उस मूवी के लिए बॉन्ड हो जाते हैं, चाहे वो मूवी हमें अच्छी लगे या ना लगे, हमें वो पूरी देखनी पड़ती है। पर ओटीटी में ऐसा नहीं होता है। हम अपने हिसाब से, मतलब अगर हमें कुछ कंटेंट पसंद नहीं आ रहा है तो हम उसको चेंज करके दूसरा कंटेंट भी देख सकते हैं। पर थिएटर में ये ऑप्शन हमारे पास नहीं होता। बट ओटीटी के पास एक ड्रॉबैक है कि इसमें आजकल जिस फॉल लैंग्वेज और मोर इंटीमेट सीन जैसे आते हैं, तो इट कैन नॉट बी, मतलब फैमिली के साथ हम ओटीटी पे सारा कंटेंट कंज्यूम नहीं कर सकते। So Continuing both with have what their own. Karthik said, Coming to OTT continuing part, with what Karthik said, That one I more depends point over upon here, our choice, dear na? friends. That In depends in upon theater, our not choice, only what we movie, want to choose or we can not. also see the drama. Seeing the drama or play in a theater is on charm. You can see that how the people play the role. That is the more important, more beautiful. While you are sitting out there and observing the people, the way they are playing the drama, that is more on significance that you cannot be seen. That you cannot feel in the OTT platform, right? Seeing continuing the with what drama Hemant like Yes, said, friend. I would Yes, like Hemant. to add That's one another point. I would like to add another point, that also going to theater, that will be a kind of economic boost to some of the motivational movies. Like I believe most of us would not have heard about Manji, that movie that remained in theater for a very less time, which was a very motivational movie. That movie was present in OTT. So why that happened? Because most of the people did not went to theaters. But that kind of movies need to be supported, so that many people know the stories of various personalities who have fought for, who have very broader ideas. So I believe yes, going to there, that creates those type yes, of prospectus. in OTT, I yes, would say OTT is more cheaper also. Like if I would talk about the Netflix subscription, then only 150 rupees we can get it for a month. But coming to the movie part, around That 300 is why rupees. Yeah, movies like I agree. yes, Anurag, that is I the can reason agree movies upon like you. Machi got the chances for Economic getting the. perspective, if we see, then OTT is greater yes, than Yes, the. Anurag. Yes, Anurag. But as my friend Ankam said that like Mazi movie is a very good movie. So
we can think about that. Like if we are going to theater, then everyone movie rating increases, so most of people want to see and they want to know about this movie. So uh, uh, Okay. from a Q Okay. point Good of view, evening. theater I in want to going add to that. theater is very good. Okay, good Okay, evening, I everyone. want So I want to add something. Actually, I'm in the favor of the OTT because OTT have a extensive kind of content available, and it has a more flexibility, and it save our times also. And in case of the theater, we are just, one of my friends said it bound to watch that kind of things. But in the OTT, we have, if we don't like that series or movie, then we can suddenly switch to another one. So this kinds of flexibility is a better one. And I think we have seen in the COVID scenario also, the OTT played a very vital role during the social, I mean, Yes, most of the isolation. movies released I on would the like OTT to itself I would during the like to I would COVID. like to I would add. like to disagree a bit with what Saurabh said, because I believe that as the things are very easily available to us, so that is also becoming kind of distractions for various students. But if we are going for theater, then definitely we will go for some very good movies. Like many movies are coming, like Dangal, like Super 30. Those movies need to be boosted, and that also do not reduce our that do not reduce our time and distraction. They do not cause that distraction. Yes, Just Ankan, want I to No, can no, agree extend with my Uncle, you. But Uncle, friend's listen, point listen. that Thing says is, You that can we have listen. to be the switch the thing is movies that while we are not okay with it, but it will tell us how to make patience while you're not agree. Sometimes in your life you are not agree with certain things, but you have to be patiently wait for that and to overcome with that. That can you will learn from that theater movie. Sometimes you can, you if you assume that movie is not that much good, but you have to be sit there and seeing the whole movie. Why? Because you pay for it. So taking is a advantage and applicable in a real life example. Certain times in situation like that you are not okay with that, but you have to face it. That kind of patience, it will also will take the advantage. That point you said, we can switch if we are not like the things in OTT okay, man. platform. That Yeah, coming Okay, to man. the societal Okay. part also, I would say OTT is more disadvantageous for the society. If you see, you will not see any smoking or health warning in the Netflix or the OTT, any other OTT. But during the movie in theater, you will see that type of warning. The government is also trying to implement that warning in the OTT also. So I would say, as per the society, it is not that good OTT. Okay, I OTT, but contradict your OTT is also OTT is also giving very the good. chance to. Yes, OTT is also very good because it can also provide you very, you can say, broad things in a very less, you can say, money. For example, if you take the example of Amazon Prime, it will give you, I think, 199 subscription for 1 month, and from that you can also buy Amazon Prime free delivery things. So this is also the thing that why people are shifting to the OTT. So I think OTT is a better choice, and definitely theater is also the better choice. But in that case, if you have to see the things visualized in 3D or VFX, then theater is the good. Okay, but yes, मेरे there, मेरे मुझको लगता है but कि there is a, OTT listen, but there is a disadvantage also, because in theater there is every from every direction there is a sounds and everything. If there are any means you have there are so much of noise pollution also. So that is But also मेरे OTT, को OTT, Aniket, OTT OTT is also giving chance to the struggling actors. जो बड़े एक्टर नहीं है, जो छोटे एक्टर्स हैं, जैसे उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म OTT बन गया है. कितने ही एक्टर जो हैं OTT पे काम करके फेमस हुए, जैसे पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ये that's why सारे I said OTT is a better. OTT पे ही काम करके फेमस हुए. तो Yes. OTT has provided them a stage for Yes, many yes, struggling definitely. actors. I totally agree with you, Karthik. Yes. yes, Aniket, I'm agree with you. Both are important for the different perspectives. Also, I one think thing that OTT in जो every city there OTT is not, it is not necessarily that theater is present, but OTT we can just enjoy in every city, in every city, in a village also, in anywhere. I मेरे would को like लगता है to कि say one thing that OTT में जो मेन प्रॉब्लम है वो है उसकी अनरेगुलेशन का। सबसे बड़ी जो OTT में प्रॉब्लम है, जो भी हमारी मूवी थिएटर्स में आती है वो सारी
रेगुलेटर होती है, जो भी बोर्ड होता है, उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। लेकिन ओटीटी में जो भी जनरली अभी तक जो भी आ रहा है वो अनरेगुलेटेड आ रहा है, क्योंकि मेरे ख्याल से ये रेगुलेशन उसमें होनी चाहिए। OTT and theater both are parallel to each other, but one cannot be replaced other completely. That is for sure. I would So like that to say. means we are going to a point that yes, both are important at their own place. Sometimes we Yes. should go for theaters for promoting very motivational and supporting movies, and for certain times when we want to promote the as my friend Karthik said, that for the struggling actors. So in those type of movies, and also to get a wider range of means genre, we can prefer the OTT platforms. I want to point out a problem in OTT. जनरली जो OTT हम जो भी ऐप यूज करते हैं वो जनरली बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। जनरली हम जब भी कोई थिएटर में मूवीज वगैरह देखने जाते हैं तो टाइम स्लॉट निकाल के 3 या 4 घंटे की मूवी देख के आते हैं। लेकिन जनरली जब भी हम OTT प्लेटफॉर्म पर होते हैं तो हम काफी ज्यादा अपना टाइम जो है वो वेस्ट करते हैं OTT प्लेटफॉर्म। Yes, sir. I totally Yes, agree I with you. agree with my friend. OTT is a digital platform where we say different things in anywhere in the world. But nowadays, in the practical things, we are addicted. हम इसके प्रति अडिक्ट होते जा रहे हैं। हम जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अपने डेली का एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो हम क्या करते हैं, हम अपना स्ट्रेस रिलीज करने के लिए हम फोन में OTT निकाल के बहुत सी डिफरेंट चीजें देख रहे हैं, जिसकी वजह से हम धीरे धीरे उस चीज के ऊपर एडिक्ट होते जा रहे हैं, और जो हमारे माइंड के ऊपर एक बेजर डैमेज कर सकता है, जिसकी वजह से एडिक्शन होती जा रही है। लेकिन थिएटर एक ऐसा हमारे पास प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम इन सब चीजों से बाहर निकल के अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ एक फिजिकल एक मतलब क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इस जिस तरह से अभी कंपटीशन का वर्ड है हमारा, जो rushing word है, so it is a theater is a good platform where we release our stress and spend some quality time with our friends and family and so on. And I I also think with I what totally, I Sakshi said, totally disagree O- with you, Sakshi, OTT because is in this case we can control yourself. So why we are blaming OTT? Like if we are preparing for any competitive exam, so we can focus on these things. Why we can focus on OTT? This is the this is not this is the like this is the not like a this is the question favoring of time for self-control, I would OTT. say. Uh, Yes. But in OTT, I would also like to mention here that it also increases the screen time. If we are going to theater, then only we can watch up to 2.5 to 3 hours. But let's say a series is released on Netflix. We really tend to say that, okay, let's binge watch the whole season in a row. Some of my friends binge watch the entire season in the night. So I would say it also increases the screen time, which is not good for our health. Yes, Especially sir. I totally agree with you. Also, But nowadays, people many become OTT platforms socially can inactive. many OTT platforms can have a limit on the screen. Okay, you can just watch for 2 to 3 hours, and after a break of, you can say 1 or 2 hour, you have to continue watching. So the thing that you continuing have with mentioned, Aniket, I would like to ask that we can still remember our childhood when we used to go to movies with our parents. So I believe comparing those theater days with this, that is something which I am telling that yes, the ambience and the quality time that we'll be spending for, even if we're preparing or anything, that is something which is very unique about going to theater. So my stand is towards theater, going to theaters. But theater, everyone cannot afford theater, so that's why they can prefer OTT. Like and OT, we can we can if OTT is a cheap like a cheap platform compared to theater, so everyone cannot afford
theater, but they can afford OTT, I think, because and everyone parents cannot allow like go to theater and watch movie every time. But in OTT, we can show that this is helpful for us and uh, not helpful for us, but uh, um, how we can understand our parents like in these things. So OTT and theater both are parallelly good for us. I also want to add that in theaters, food food is also price जो होता है food का वो भी ज्यादा होता है. So theaters are costly affair as compared to OTT. I would like to add one point, and I'm sure all of you agree with that point. In theater, we go with all our friends or family members, and seeing the movie or drama together, that has something special, fun or entertainment which cannot be replaced by the other things. That must be, I guess, each and every one of you agree with this, which is cannot be you get by the OTT platform. for Completely sure. agreeing with you, Yes, Hemant. yes, That I was something which completely I was agree with saying. you. Yes, But I think OTT it can creates the it isolation can and depression, and we can chill out with our friends by going to the theaters, I would say. In that Exactly, Anurag. way, Yes. theaters are good. Yes, Anurag, and OTT and theater both are necessary for us. I think OTT and theater the choice can vary from person to person. For example, किसी को OTT पसंद है, किसी को theater पसंद है, तो we cannot say कि theater is good or OTT is good. Both have मतलब personal view किसी का भी अलग अलग हो सकता है कि हाँ मुझे OTT पसंद है, मुझे theater जाना पसंद है. Yes, Karthik. It can vary from person to person. Yes, Karthik. मैं एक और बात थिएटर की बोलना चाहता हूँ कि कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जिनका एक्सपीरियंस हम मोबाइल पे या फिर घर में जो भी हमारे पास स्क्रीन होती है उन पे जो लेते हैं तो उतना अच्छा नहीं होता है. जैसे अभी कुछ मूवीज आई हैं, जैसे जो भी हमारे मार्वल की मूवी हैं, जो भी मूवीज हैं, उनका थिएटर में जो एक्सपीरियंस होता है वो एज कम्पेयर टू OTT मेरे को अच्छा लगता है. ये ज्यादा सही. I totally agree with those. And I just want to add another thing that in various movies, we see that the government, from the economic perspective, since some of the movies are very good, then the government is also promoting that by completely cutting out or reducing the tax in the theaters. But that is something which I believe is not available, or the government does not support these third-party apps for that. So, and it is supporting there because it wants that more number of people should go to theaters and support these motivational stories. Definitely, if OTT platform will provide that motivational stories in free of cost, then why people are go to the theaters? The point is, okay. Yes. Now today era, we have every movie in our phone, okay, with free content. So why people should invest on theater? The other thing you can say that for our personal aspects with our friends, family, we can go for theaters. But there is no doubt that OTTs nowadays surpass the theater. Okay, that's up. I also want to add one point to Aniket that फॉर एग्जाम्पल कोई मूवी है वो थिएटर में अच्छा नहीं कर पाती तो वो अपना इकोनॉमिक जो पैसा है वो रिकवर करने के लिए OTT राइट्स बेच के भी अपना पैसा रिकवर कर सकती है. तो OTT आल्सो अ गुड ऑप्शन टू रिकवर मनी फॉर अ मूवी. Yes, Karthik. Okay, so who's to conclude? I think Aniket. Yes. Okay, just conclude it out. So friends, today's discussion, I think it's a smooth discussion, and we all have someone will in the favor of that OTT platform is good, someone is in the favor that theater is good. But I think in my personal opinion, I think that OTT and theater are both are good. Okay, there is no doubt. In 1990s, there is an era of you can say theaters, but nowadays OTT surpasses the theater. But for our parents, still now theater is the better choice.
So we have to accept it that OTP and theater can be good and they can be run simultaneously. That's all. Thank you. Okay, so it was a topic of entertainment. After a long time, we had discussions on education, polity, economy, and now the topic was all entertaining one. So I hope it was easy one for you. But you know, the topic was all the content was getting repetitive. What was the content repetition? Time, money, time, money. हर कोई एक ही चीज को बार बार कोई किसी वे में कोई किसी वे में बोल रहा था. Before I come to serious discussions and coming to each one of you and giving you good points for it, let me tell you one thing. Tara, you had a massive, you wanted to speak much. You know, you had not unmute your mic. No one could hear you. The entire discussion I was seeing her and she was trying, her lips were trying to move and all. I could not point her out and she forgot to unmute her mic. Sarah, it's still mute. Unmute it. Sarah, it's still on mute. No, we cannot hear you. That's why I was thinking, I'm speaking and nobody is listening. And this was happening. Everyone was into discussion and all. Sarah was, she was trying to speak. She was speaking. I was checking the screen again and again. Sorry, could not help you. So Sarah was the one who could not speak a single word today because of her mic. So make sure such technical issues do not arise. Now, this is a live example which actually happened. And according to her, she was participating. She was speaking. Okay. Yes, ma'am. And I was thinking, I am giving a good point. Then why nobody talking about it? Or they are just repeating the same point. Okay. Now, coming to each one of you. I would come from the start only. Now, this was a topic of entertainment. We come to different topics. I had the very thing at the start. I told, Aruna, how you're improving so much? First, she was at the very start. She was not able to frame a sentence also. And now I see Aruna is doing massive participation. Aruna, what are you eating? Jadi Buti are you? How are you No, ma'am. Actually, मतलब थोड़ा सा टाइम दिया और आप जो डिस्कशन के बाद बोलते हो कि थोड़ा सोचो तो बस वही थोड़ा सा करना है. It is improving. You are improving. But I tell you now, the topic was very simple. Each one of you, before I come to one and all. Topics क्या क्या बोले आप लोगों ने? टाइम और मनी के सिवाय मुझे पॉइंट बता दो जो आपने किसी और तरह से बोला. एक ही चीज की रेपिटेशन थी, फ्लेक्सिबल हो गया, उसमें भी टाइम बच रहा है. किसी चीज में मनी का हो गया. हाँ, 2-3 पॉइंट्स बहुत अच्छे थे and there were new students who actually spoke about it. Hemant ने start किया regarding OTT versus OTT. Hemant, you could have started. It's an entertainment topic and we can relate with it. We being the youth are very much fan of. मैंने आपको starting में बोला था, hint भी दिया था. You're seeing the craze of OTT in youth. यहाँ बच्चों में आपको दिखेगा, जो teens हैं उनमें ज्यादा दिखेगा. You won't see the craze of OTT right now in old age or right now in the childhood scenario. तो आप ये ratio भी कर सकते थे किसमें ज्यादा चल रहा है इस टाइम पे and why OTT is getting on boom right now, जिसकी वजह से theaters जो है वो suffer भी कर रहे हैं because anything it gets streamed in 1 or 2 days. I tell you, I check Netflix आता है, कोई भी आता है, even OTT apps are so many, like they are trying to sell जैसे होता है ना कंटेंट कॉपी करके बेचने की कोशिश करते हैं. तो फ्री कंटेंट के लिए भी डिफरेंट एप्स आ रही है. वो भी आप बोल सकते थे कि आपको फेक चीजें बहुत मिल रही है. नो वन टच द पॉइंट. OTT देखते हो आप लोग, एवरी वन ऑफ यू वॉचेस OTT, राइट? कुछ ना कुछ नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, कुछ ना कुछ चलाते होगे, राइट? अकेले देखते हो कि फैमिली के साथ देखते हो? मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट यू आर डूइंग ऑन योर फोन ऑल अलोन, right? Yes. Did anyone listen that we are sitting alone? And even I start my day, I tell you, I start my day on Hotstar. And my parents are like, you are starting your day on this. Like, I'm so addicted that in the morning, I need to watch one episode. I don't know why, but yes, that is my routine in the morning. And that what is making me, and they're sitting in front of me, I'm eating my breakfast and I am actually watching my this. This is what is actually the scenario, right? And in the many of us. And we're going to discuss that point. Ki youth is getting isolated. Your parents want to talk to you. They want to sit together with you and they want to discuss the things with you. And because of the OTT, because of the addiction point was given by Sakshi. This is a wonderful point. No one actually started with it. She only one point. मैम एक्चुअली ये सारा मेरे पॉइंट में एडेड था और जो हम कहे जा रहे थे बट सुना ही नहीं पड़ा. देखा, अब आपका तो कोई पॉइंट सुना ही नहीं हमने. Make sure your mic is not on mute next time, okay? Because I won't help you in between. I am starting a discussion, so I cannot help you. I wanted to help you, but sorry, I could not.
तो इस तरह के पॉइंट नो वन डिस्कस्ड। चीपर का आपने डिस्कस किया, नन ऑफ यू डिस्कस्ड की अगर मैं ओटीटी पे काम करती हूँ तो ओटीटी सबसे ज्यादा कब स्टार्टिंग पॉइंट पे आया था, राइज कब हुआ था? कैन एनीवन टेल मी? कोविड। लिया कोविड का प्रॉपर? Why you guys do not discuss सभी कि कोविड के टाइम पे ज्यादा इन्फ्लक्चुएशन चेंज किया था मैम डिस्कस कोविड के टाइम पे। It was very none of you spoke in, ma'am. It was a big massive rise during the COVID and actually helped us to pass. It is not कि वो बून में कब आया, पास कैसे हुआ था हमारा टाइम प्रॉपर? कोविड में सिर्फ इसका आया, थिएटर्स में हमारा वो हो गया, बंद हो गया बिल्कुल, क्योंकि हम they were not able to record new movies. That time what was the source of your sole entertainment? That could you fix it out? Not in terms of COVID के टाइम में सिर्फ बून आया, but COVID actually it helps us to surpass the time of the COVID. वो पॉइंट बोल सकते थे। अभी मैं सिर्फ पॉइंट्स बता रही हूँ जो आप नोट कर सकते थे एक्स्ट्रा। देन कंटेंट कहाँ का अच्छा होता है, लेटेस्ट का कि इसका? कंटेंट का भी पॉइंट आया था। आई कम किस किसने ये पॉइंट्स बोले थे? मुझे कार्तिक का भी पॉइंट बहुत अच्छा लगा आज, ही आल्सो गिव 1-2 पॉइंट्स गुड। साक्षी का पॉइंट बहुत अच्छा था, अक्षय के भी अच्छे थे। हर्षित आपके नेट में प्रॉब्लम थी तो आई कैन नॉट हेयर यू मच, बहुत अटक अटक के हो रहा था आपका कम वन ऑन वन। तो कंटेंट का राजा कौन होता है? You might have seen sometimes, अगर मैं देखूं UPSC aspirants were there, एक कोटा फैक्ट्री सबने देखा होगा, most of you might have seen such I think motivational पंचायत was something that was very motivational, if any one of you have seen it। तो वो क्या है, कंटेंट में आपको लगता है कि विन कौन कर रहा है इस टाइम पे? OTT ज्यादा कर रहा है, क्योंकि अगर आप बॉलीवुड की मूवीज देखोगे they would have one scenario and what is that, जो that is there is a villain, there is a hero heroine, they get separated and then they meet। That's a kind of a crux which goes in every movie। And right now we see Punjabi movies are there, they don't have a content, they just are for us like to grieve, to give us some kind of a relaxation। Bollywood movies का content ही नहीं आपको दिखेगा या copy paste होगा। तो content, realistic content हमें ज्यादा कौन दे रहा है? I think इनमें से आपने से एक ये भी बोला था कि छोटे सुपरस्टार्स को या छोटे जो स्टार्स है एक्टर्स को उनको पार्टिसिपेशन का भी मिल रहा है। That was also given one by amongst one of you, I have not know I have given this one। कार्तिक नहीं दिया था? ओके ठीक है। उसके बाद क्या आया था, आपने फ्लेक्सिबिलिटी का सबने मेंशन किया था, ठीक है। टाइम की ड्यूरेशन का सबने मेंशन किया था, दैट वाज ओके। जो आपने थिएटर्स के सबसे अच्छे पॉइंट्स नहीं दिए, थिएटर में जाके क्या फीलिंग आती है, जो आपको 3D अगर 5D मूवीज का है OTT पे मिलते हैं, देखते हो? मैं बोला था उसका एम्बियंस मैच नहीं कर सकता। 3D मैम, VFX मैम सब बोले थे मैम। एम्बियंस, these were the kind of things जिस पे आपकी बहुत अच्छी डिस्कशन हो सकती थी। अनिकेत वाज फ्लक्सिंग कि कभी फेवर में कभी अगेंस्ट में। OTT के वही एक चीज मैम क्या मैम रिजिडली अगर एक बार लेंगे तो एक ही मैम उसको फोकस करेंगे ना मैम? नहीं, इट्स नॉट अ डिबेट, इट्स नॉट अ डिबेट। ही वाज राइट इन डूइंग इट, ही वाज शिफ्टिंग कभी इधर कभी उधर की, जहां अच्छा पॉइंट मिला मुझे बस बोलना है। अनिकेत वाज इनटू दिस कि कभी फेवर, बिकॉज़ डू रिमेंबर जीडी में कोई बैरियर नहीं है आपको कि आपको एक ही चीज बोलनी है। यू कैन गो इन फ्लक्स ऑफ एनी, हिंदी इंग्लिश का भी कोई बैरियर नहीं है, जो मर्जी लैंग्वेज आप यूज कर सकते हो, ये याद रखो, ठीक है। देयर इज नो वन लैंग्वेज। सेंसर बोर्ड का पॉइंट दिया था, दैट वाज अ गुड पॉइंट। रेगुलेशंस वाला आई विल कम, मुझे अभी ऐसे नहीं याद किस किसने पॉइंट दिया था। जो मुझे सबसे अच्छे पॉइंट्स लगे थे, सुपर 30 का जो अपने पॉइंट्स दिया, आई थिंक इट वाज गिवन बाय अरुण ने दिया था। नो आई हैव रिटन अरुणा ने दिया था, अरुणा ने दिया था, राइट मैम? अंकल ने भी दिया था, अंकल ने भी दिया था, फिर उसके पॉइंट को कंटिन्यू। आई हैव नोटेड इट आउट किसने क्या पॉइंट दिया था, वो मैं बाद में आऊंगी, बट आई एम गेटिंग इट अ गुड पॉइंट। तो सेंसर बोर्ड का इट वाज अ गुड वन। 3D फीडी, एक चीज जो आप सब लोगों ने मिस की, यू नो, अगर आप थिएटर में जाते हो, यू मीट सो मेनी पीपल, सिक्योरिटी गार्ड्स आर देयर, टिकट चेकर्स आर देयर, एम्प्लॉयमेंट कितने लोगों को मिल रही है? दैट इज अ बिग पॉइंट जो आप लोगों ने मिस किया है। नन ऑफ यू गॉट इनटू इट। आई डोंट नो व्हाई। आप लोग खुद देखते हो, आप लोग किस लिए जा रहे हो? एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हो, और आप ये डिस्कस नहीं करते हो। आई डोंट नो व्हाई यू गाइस मिस इट आउट कि जो आप में है, यूथ में है, वो वाले पॉइंट्स मत छोड़ा करो, जेनरिक पॉइंट्स पे भागते हो। एंड मेरा एक पॉइंट था उस पर, वो OTT प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे कंटेंट बन रहे हैं, तो उससे बहुत लोगों को अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। मेरा ये मतलब था। Everyone is not able to get on OTT पे आना इजी नहीं है, उसके लिए भी बहुत आपको चाहिए, लेकिन आपको थिएटर्स में जितना मिलेगा सिक्योरिटी गार्ड्स को नहीं मिल पाएगा ना, वो नहीं आ पाएंगे। आपको टिकट चेकर्स को नहीं मिल पाएगा। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कितनी इंक्रीज होती है, आप ये सोचिए, बहुत हद तक वो इंक्रीज होती है अगर थिएटर्स खुले। ऑफलाइन में ऑनलाइन में यही चीज का फर्क है। एवरीवन इज इनटू ऑनलाइन,
आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम होती है. चैट जीपीटी आ गया, many people were into test, oh my god, what about my jobs? ये होता है. Yes, ma'am. रेशियो कम हो Yes, जाएगी. अब क्या होगा, है ना? एक चीज आती है टेक्निकल, बट none of a person can beat a person in reality. लोग होना एक ऑफलाइन में, एक बॉन्डिंग होना, ऑफलाइन ऑलवेज विंस. थिएटर की एक चीज आप मिस करते हो. आई डोंट नो इफ एनी ऑफ यू हैव वॉच्ड थिएटर्स. आई थिंक हेमंत ने ये पॉइंट उठाया था क्योंकि मैंने ही स्टार्ट में डिस्कस किया था. थिएटर अकेला वो नहीं होता, मूवी थिएटर्स नहीं होते, थिएटर्स में प्ले भी होते हैं. प्लेस भी देखना चाहते हो आप, जो छोटे आर्टिस्ट को वो भी एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, जहां से आपका कॉन्ट्रास्ट डिस्कस हो सकता था कि मैम थिएटर्स आर देयर व्हिच गिव राइज टू स्मॉल पीपल, जैसे होते हैं ना जो आई टेल यू जो प्रिपेयर कर रहे हैं स्टैंड अप कॉमेडीज वगैरह. नॉट एक्चुअली स्टैंड अप कॉमेडीज, वो अलग आ जाता है. जो थिएटर्स आपने देखा होगा, जैसे मुझे याद नहीं आ रहा है, कोई प्लेज होते हैं, शेक्सपियर के प्लेज होते हैं, तो वैसे ही वो दिखाते हैं. लाइक आई नो इन चंडीगढ़, या सो ऐसे छोटे छोटे प्लेस दिखाते हैं, एंड दे गो डिफरेंट एरियाज इन इंडिया आल्सो, दे मूव टू गिव. वहां पे होते हैं, पर वो दे डोंट टेक एनी टिकट्स एंड ऑल दैट. मोस्टली इट्स फ्री वन. बहुत कम होते जो आई थिंक विद द टिकट्स एंड ऑल दैट है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं, जो थिएटर आर्टिस्ट होते हैं, वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, वो सिर्फ उसके लिए आता है. तो उसको भी एक डायमेंशन ले सकते हो, बट यू कैन नॉट डिस्कस इट एट अ वेरी ब्रीफ वन. Now coming to each one of you, I tell you, Hemant ने start किया. Hemant intro में थोड़ी कमी थी. You could have started, wow, it is an entertainment topic and we didn't have ever discussed about it or something like that. And this is something you can relate very easily. And then you could favor. आपने favor और against फिर नहीं दिया अपना, है ना? ये चीज. उसके बाद अंकन की बारी आई. अंकन, it was a good ambience वाला आपने start किया, so it was a nice point from you. ठीक है, उसमें आप एम्बियंस में डिस्कस कर सकते हो कि एम्बियंस में क्या क्या होता है. साउंड क्वालिटी, द स्क्रीन इज अ बिग इन साइज, वी गेट इनटू दैट रियल फील ऑफ अ मूवी, दैट इज एक्चुअली वन. ओके, देन ओके, सो अंकल, इट वाज अबाउट द साउंड क्वालिटी, इट अबाउट, उसको एक्सप्लेन भी करो एम्बियंस का मतलब क्या है. वो चीज मिस करते हो कि मैम एक्चुअली लास्ट टाइम मैम थोड़ा ज्यादा बोल दिया था, आप बोले थे कट करके निकले, इसलिए मैम थोड़ा गो फॉर अ मीडियम. जैसे अरुणा इज कॉन्स्टेंटली, अरुणा को 3-4 बार इतनी डांट पड़ी है. शी गॉट आई थिंक स्कोल्डेड एट द वेरी स्टार्ट, नॉट एज अ बिग स्कोल्डिंग, बट नाउ शी इज, नाउ वो कर रही है, ब्लफ कर रही है ना, कुछ कर रही है, वो सही बोलना शुरू कर रही है. तो अभी तो आई थिंक इट्स योर सेकंड और थर्ड वन, आई गेस मैम थर्ड वन ना. तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि इंप्रूवमेंट 3 में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा, इंप्रूवमेंट, बट या यू हैव टू प्रैक्टिस इट रेगुलरली. ये चीज याद रखा करो. जीडी इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस. जितने पॉइंट्स बाहर आएंगे, जितना पार्टिसिपेट करोगे वोकल्स, आपके बहुत परफेक्ट होगा. ठीक है. नेक्स्ट वाज हर्षद. हर्षद had a, I think, network issue. Harshad, are you there? I don't know if he's there. Okay, then came, I think, Aniket came. Aniket मुझे ये नहीं समझ आई, दोबारा से इंटरव्यू स्टार्ट कर दी, दोनों की स्टार्टिंग कर दी. क्योंकि मैम ओटीटी, मैम जनरली ओटीटी की बात तो कर रहे थे, तो दैट इज गुड, यू एक्सप्लेन दैट, यू गुड. पर आपने फिर दोनों के कॉन्स हैं, दोनों के प्रॉज है, दोनों की ये वो इंट्रो तो कर दी ना हमने, हेमंत ने कर दी. दोबारा प्रॉपर इंट्रो नहीं करनी है. एक ऐसा होता है कि आई थिंक ओटीटी स्टैंड्स फॉर दिस एंड आई एम इन द फेवर ऑफ इट एंड ड्यू टू दिस एंड दिस रीजन. तो उसको पार्ट्स में डायमेंशन करो. वो लंबा पॉइंट हो गया, दैट आई वाज लाइक अनिकेत को हेमंत ने कर तो दिया, अनिकेत दोबारा क्यों कर रहा है. ओके, ठीक है. उसके बाद इट वाज आई थिंक अरुणा, प्राइवेसी. अरुणा, मुझे प्राइवेसी वाला पॉइंट समझ नहीं आया, दैट इन रूम यू कुड वॉच इट आउट. अरुणा, आर यू देयर? मैम actually I want to say that like मतलब जैसे कि ये होता है कि हम लोग अगर रूम में देख रहे हैं तो कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है, और मतलब जैसे कि किसी को पता भी नहीं चलता, हम लोग देख लेते. लेकिन घर से अगर ओटीटी मतलब थिएटर जाते हैं तो मम्मी पापा लाइक नहीं ये वो, बस ये कहने का मतलब. देखना शुरू करो. अभी अभी आवाज आएगी घर से. हाउ कैन यू वॉच, मुझे नहीं पता, हाउ कैन यू वॉच 3 hours वेब सीरीज और समथिंग फॉर 10 hours कॉन्स्टेंटली. मैम एक्चुअली क्या करते हैं कि मम्मी को भी साथ में दिखा लेते हैं ऐसे, मतलब जैसे खुद देखते हैं तो मम्मी को भी, मम्मी तुम भी देखो लैपटॉप से. वाज नॉट अ मच वैलिड, ना. ठीक है, ये थोड़ा वैलिड नहीं था. उसके बाद वाले पॉइंट्स दे वर गुड, बट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, एंड दैट इज नॉट कि प्राइवेसी है या फिर रूम में आप देख सकते हो, वो नहीं आएगा, बिकॉज यू कैन गेट बॉदर्ड. थिएटर्स गिव यू मोर, यू कैन से दैट विदाउट interruptions or without any disruptions, you can watch the entire content. You can sit there. If I'll say my parents to go and watch a movie, they will be like, we will be bound for 3 hours together because they cannot come in between. They have invested money also. That is a big thing. Okay. OTT होता है जब भी आप देखो, pause it out.
मैं मॉर्निंग में एपिसोड देखूंगी, आई कैन वॉच इट एंड कि मैंने छोड़ दिया था, आई जस्ट टेल यू दैट द फैक्ट राइट नाउ, आई वॉच्ड द एपिसोड, इट इज 20 minutes, I watched 15 minutes in the morning, 5 minutes I was watching it right now. That's a flexibility, but that is something, yeah, we have to watch it. Addiction भी है ये, साक्षी ने पॉइंट किया था, and that was a very wonderful point because we all are in some constraint addicted to it. उसके बाद आ गया था हेमंत का थिएटर का चार्म है, समथिंग लाइक दैट। हर्षद का एंटरटेनमेंट का था, अंकन का देन अगेन इकोनॉमिक बूस्ट फॉर मूवीज। या अंकन, दैट वाज अ गुड पॉइंट फ्रॉम योर साइड कि मूवीज जैसे बर्फी का आपने, आई डोंट नो कौन सी मूवी डिस्कस की थी, मांझी बोला था। मांझी, आई रोट इट इन अ वेरी हरी, मैंने कहा बर्फी कैसे दिखा है, तो दैट वाज अ गुड वन कि आपने पॉइंट डिस्कस किए हैं। देन अनुराग, ओटीटी चीपर, वही आ गया आपका ना, ज्यादा कंटेंट शुरू हो गया था, फिर से अब रेपिटेशन, चीपर फ्लेक्सिबिलिटी, चीपर फ्लेक्सिबिलिटी, अब यहाँ से रेपिटेशन शुरू हो जाती है। देन अरुणा ने भी मूवीज के एग्जांपल रियलिटी ओके, सौरभ ने दिया था, सौरभ इज देयर, आई थिंक सौरभ, आर यू देयर? दैट वाज अ वेरी गुड पॉइंट ऑफ योर्स एंड ही हैज अ ग्रेट वोकल, आई टेल यू। ओटीटी एक्सटेंसिव आपको डोमेन दे रहा है एंड टाइम भी मैनेज हो रहा है, तो सौरभ इट वाज अ गुड स्टार्ट इफ यू आर हियरिंग इट, आई डोंट नो इज देयर। देन नेक्स्ट वाज अगेन सुपर 30 का पॉइंट अंकन ने दिया था, राइट? अंकन, अगर मूवीज का डिस्कस करो एक के बाद कुछ और डिमेंशन लाया करो, आपने माजी का डिस्कस कर दिया, वो रिपीट हो जाएगा, हो गया एक बार रिपीटेशन। मैंने बोला कि बार बार एक ही चीज की रिपीटेशन नहीं करना, नया डायमेंशन सोच के लाना, अगर कोई और पार्टिसिपेट नहीं कर रहा उसमें। उसके बाद हेमंत का पॉइंट था, इट वाज रिक्वायर्ड पेशेंस। हेमंत, पेशेंस का कुछ ज्यादा रेलेवेंट नहीं है कि हमें पेशेंस सिखाती है, ठीक है, तो दैट वाज नॉट मच रेलेवेंट पॉइंट। अनुराग वाज ओटीटी डिसएडवांटेज है क्योंकि ऑफ हेल्थ एड्स। वेयर इज ही? अनुराग, ओके। अनुराग, अगर आपने देखा हो ना, दैट इज राइट, सेंसर बोर्ड बोल सकते हो, दैट इज बेटर, बट हेल्थ एड्स को बोलना कि वो आप बोल रहे हो कि स्टार्टिंग में जो पान गुटका या वो वाली एड आती है, बिकॉज यू नो अगर आप ओटीटी का भी देखोगे कंटेंट, तो साइट पे उन्होंने लिखा होता था देयर इज अ काइंड ऑफ दिस, मतलब इंस्ट्रक्शंस हर कोई मेंशन करता है। नो मैम, ये तो डिबेट मतलब अभी चल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ ओटीटी मतलब नहीं दिखाते बिल्कुल भी, आप उनका पूरा कंटेंट ना, वही कंट्रोवर्शियल, ये कंट्रोवर्शियल आता है। जब मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना कि कंट्रोवर्शियल पॉइंट मत उठाओ, तो इसको कोशिश करा करो कि डिप्लोमेटिक होके बोलो, बोलो कि मैम सेंसर बोर्ड नहीं है, कोई रेगुलेशंस नहीं है, टीम नहीं है, तो वो पॉइंट बेटर हो गया उसका, ठीक है। तो यही चीज कंट्रोवर्सीज का मतलब ये नहीं होता कि कोई आपने बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी उठा दी, यही पॉइंट होता है। जैसे कल अरुणा ने हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क में आई थिंक मेसी का पॉइंट उठा दिया था कि मेसी ने तो स्मार्ट वर्क किया है। वी आर नॉट, हु आर वी टू से कि मेसी ने हार्ड वर्क किया कि स्मार्ट वर्क किया? दैट इज ट्रू। एक्चुअली हम वो ये कहना चाह रहे थे कि वो हार्ड वर्क भी किया और स्मार्ट वर्क दोनों मतलब साथ में किया, तब जाके मतलब कि वहां तक, क्योंकि मैम स्पोर्ट्स एक ऐसा फील्ड है जिस दोनों पैरेलली जरूरी है, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों। बट वी कैन नॉट नेम एनीवन, आई से यू द सेम थिंग, कंट्रोवर्सी में मत वाले पॉइंट्स मत उठाओ जिसमें आपके खुद ही क्लियर हो जाए, है ना, ठीक है, दैट वाज द पॉइंट। उसके बाद कार्तिक हैड अ पॉइंट, और थी स्ट्रगलिंग एक्टर्स के लिए कार्तिक का पॉइंट था। कार्तिक, यू हैव ग्रेट आइडियाज, आई हैव सीन इन 1 to 2 GDs, participation is very less means very less, है ना, you need to increase your participation and that actually matters in an GD. And Aruna, Akshay था, there is Akshay, yeah, अक्षय ने भी अनरेगुलेशंस या मेंशन किया था। अक्षय, you could explain that point a little bit in a better way. Explain नहीं था वो पॉइंट, मतलब एक होता है ना पॉइंट को बोलते हो और छोड़ देते हो, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करा करो कि what does it actually mean, and that was your first ever, yeah. मैम ये जो रेगुलेशन का था मैम, थिएटर के रेगुलेशन का, तो मेरे को मैम उस बॉडी का नाम ही नहीं आ रहा जो वहां पे रेगुलेशन, यहाँ तो वो पकड़ो ना, या सेंसर बोर्ड पे छोड़ दिया करो, सेंसर बोर्ड तो सबको याद होता है, लेकिन किसी ने उठाया नहीं वो पॉइंट, ठीक है। वो या तो सीधा बोलते हैं कि आई सपोर्ट कार्तिक, जैसे आप लोगों में कमी क्या थी जो नए हो अभी, कि आई एम इन द फेवर ऑफ कार्तिक, कार्तिक आई लाइक योर पॉइंट, कार्तिक आई वुड लाइक टू रेज दैट पॉइंट अगेन, इस तरह से यू डोंट डिस्कस दीस थिंग्स राइट नाउ, ठीक है, तो इसको ऐड ऑन करो। उसके बाद हेमंत, अंकन, रेंज, टाइम, वो सारा एक ही चीज का शुरू हो गया था। एंड साक्षी का मुझे उसके बाद मुझे बेस्ट पॉइंट लगा था, बाकी भी आए रहे, साक्षी का, that is she gave 1 point but yeah, it was a good one. I repeated it again and again. Now the problem is the ones who participated are very less. Anurag, Karthik, Akshay, Sakshi, Saurav, they all come in one category. You need to participate more, open your vocals more. It's just a simulation. Why you guys are not participating?
पार्टिसिपेट नहीं करोगे, दे आर ऑल्सो ट्राइंग, उन्होंने भी 0 से स्टार्ट किया। आई थिंक अरुणा, शी वाज द वन, आई स्टिल रिमेम्बर, जिससे फर्स्ट में 0 पॉइंट्स बोले जा रहे थे, एंड नाउ शी इज एबल टू स्पीक एटलीस्ट, कि मैं उसका नाम इसमें नहीं ले रही हूँ कि बोल नहीं रही है यार, बोलो, पार्टिसिपेट करो। व्हाट इज द प्रॉब्लम? वी आर ट्राइंग टू, आई एम ट्राइंग टू कवर ऑल द टॉपिक्स विद यू, और जो मैंने पॉइंट्स आपको बोले हैं, आई हैव टोल्ड एवरीवन, टेक अ सेपरेट नोटबुक फॉर द ग्रुप डिस्कशन, उसमें हर टॉपिक को नोट करो। आज जो मैंने आपको टॉपिक्स पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि ये चीजें कमी थी, अनएम्प्लॉयमेंट वाला पॉइंट हमने, एम्प्लॉयमेंट वाला पॉइंट, स्किल्ड लेबर्स वाला पॉइंट मिस किया, या आइसोलेशन वाला पॉइंट मिस किया हमने। अगर आप अकेले में ओटीटी में देख रहे हो, आप लोग इतने ज्यादा एडिक्टेड हो रहे हो, आप लोग को, देयर आर सम पीपल हु गेट सो मच इनटू इट, दे कैन गेट डिप्रेस्ड आल्सो बिकॉज़ दे आर ऑल इनटू दिस। कुछ और उनके पास फ्रेंडली सर्कल भी नहीं है। थिएटर्स में आपको ये नहीं लगेगा यू डिप्रेशन वाला हैव मैंने बोला था, फ्रेंडली सर्कल, यू बिकम मोर, ये वाला पॉइंट मैंने। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको एड ऑन करने ही करने हैं। ये सारे पॉइंट एट द एंड नोट करा दो। मैम जो एक चीज इम्पोर्टेंट क्या पूछना है, थे, मैंने वो बोला था, नहीं बोला था क्या? मैम जैसे मैम अगर हम दो साइड्स को सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैम उसको हम एक साथ नहीं बोलेंगे, जब कोई उसको कंटिन्यू करेगा मैम उसके साथ ही बोलेंगे कंटिन्यू विद दैट, और वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है मैम। मैम am I audible? Yes, yes, you are audible. You're I'm audible, sorry. audible, Uncle. Audible. I can hear you. मैम Go वही ahead. चीज पूछना है कि मैम जैसे मैम मैं बोल रहा हूँ कि अगर हम दोनों चीज को सपोर्ट कर रहे हैं मैम, आज के जैसे मैम दोनों को सपोर्ट करेंगे, तो मैम क्या हम एक साथ उसका 2 पॉइंट्स बोलेंगे, या फिर अगर मैम दोनों डिफरेंट डिफरेंट टाइम में जो भी पॉइंट चल रहा था उसको सपोर्ट करके उसी मैम मतलब दोनों के तरफ पॉइंट्स बोल सकते हैं मैम? जैसे आप अनिकेत ने बहुत बार दोनों पॉइंट्स इकट्ठे बोले हैं। How much I remember, he has spoken both the points कि ये भी important, ये भी important. That's not a wrong one. But ये याद रखना कि अगर इकट्ठे बोल रहे हो ज्यादा लंबा ना हो जाए, अलग अलग में सपोर्ट करोगे, आपकी क्लियरेंस और आपके एग्जांपल से आप ज्यादा अच्छे से सपोर्ट कर पाओ। That is actually a kind of a case. ग्रुप डिस्कशन में कोई ऐसे बैरियर्स नहीं है, ये आप पे डिपेंड करता है। जैसे अब आपने जो बहुत अच्छा पॉइंट दिया, सुपर 30 का दिया, अब मैं उसकी एग्जांपल देती हूँ, साक्षी का पॉइंट देती हूँ, अगर वो नेगेटिव बोल रही थी साथ में पॉजिटिव बोल रही थी, तो उसका इम्पैक्ट क्या हो जाता, न्यूट्रलाइज हो जाता। मैम आई वांट टू अरुणा, मैम आई वांट टू आस्क, लाइक जैसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो चाहते हैं कि मतलब हम लोग थिएटर ना जाएं और घर पे ही अगर बैठ के देख लें, तो इस पॉइंट को अगर ऐड करना चाहते हैं, इस टाइप के पॉइंट को, तो कैसे ऐड करेंगे? अगर मतलब ये ऐड करना आ जाता है that even family we can watch the family time, we can get content। मैंने कंटेंट पे बोला था ना, कंटेंट अच्छा आता है ना? तो कंटेंट किसका है? कंटेंट का राजा तो आ रहा है इस टाइम पे, ओटीटी चल रहा है, क्योंकि रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस और बहुत मोटिवेशनल भी है। तो sometimes you could say that the live example is even parents are very supportive that OTT there are some channels which the parents even enjoy and all the 4 family members can even watch it together। उसको इस तरह से बोल सकते हो। मैंने बोला ना, उस टॉपिक्स को, डायमेंशन को पकड़ा करो, हेडिंग्स को क्रैक कर लो, अपने आप लाइंस बन जाएगी तुम्हारी। जो तुम्हें 2-3 मिनट मिलते हैं ना, वो हेडिंग्स को क्रैक करने के लिए मिलते हैं। और हम क्या कोशिश कर रहे हैं, आई एम ट्राइंग टू मूव डिफरेंट डायमेंशंस विद यू। एक एंटरटेनमेंट को उठा लिया, कभी कोई टॉपिक उठा लिया, कभी एजुकेशन का उठा लिया। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप नोट्स बना रहे हो उसके, आप रिवाइज करते हो पॉइंट्स को कि नहीं करते हो। दैट इज योर वर्क नाउ। Yes. After this, my work gets completed. Now your work starts. After this GD, 5 minutes will be there. Everyone, before you sum up, सोचो 5 मिनट और है लंबी GD, लिख लो अपने पॉइंट्स जल्दी जल्दी और ऐड ऑन करो। Good for you people, right? Okay. Anyone, any doubts before I just conclude it out? Okay, so we had covered one more, entertainment purpose, and I think थोड़े points आपको justify है, जो नहीं बोले वो add on करो, ठीक है? Go for more vocals, जिन्होंने participate नहीं किया, कार्तिक you have good pointers, मैं अभी भी बोल रही हूँ participate करो, अच्छा, it would be better. Same for you अक्षय, अनुराग, सौरभ, साक्षी, you need improvement, अपना थोड़ा सा vocals improve करो। हेमंत, good going, but थोड़ा सा content polishing important है, and same thing repeating again and again. अनिकेत, लंबे के कंटेंट के चक्कर में मत पड़ा करो, इंट्रोड्यूस बार बार मत करो, ठीक है? कंटेंट वही, बोल अच्छा रहे हो, वोकल्स अच्छा है तो अच्छे से बोलो ना, ठीक है? सौरभ का एक मुझे याद है, आई डोंट नो इफ ही इज हियरिंग, सौरभ ने वोकल्स लिए बहुत अच्छा बोला है, ही इज अटेंडिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम आई थिंक, और उसका बहुत अच्छा था। अंकल पॉइंटर्स अच्छे हैं, रिपीट नहीं करना, मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, तीसरी बार बोल लंबा हो रहा था या फिर रेपिटेशन पे मत जाया करो। क्लियर एवरीवन? यस मैम। कंक्लूजन मैम, जो कंक्लूड किया मैम, उसमें कुछ
Yeah, am I clear? I think the video got paused. Yeah. Yes. Is it fine now? Yes, Okay. ma'am. Yes. Okay. Chalo, we'll meet tomorrow, everyone. Okay. All the best, Okay, ma'am. and we'll meet tomorrow. Take care. Good night. Okay.